he made an approach from runway 29, and then he carried out a missed approach, after which, again, he tried to make an attempt from runway 11. This is what I also have no contact with the pilots. They are not there. It is a very unfortunate incident. We are very sad about it. We are trying to first be with the family, solidly with the family who have lost their best next of kins. It's a very unfortunate incident. Primarily, it appears that, the pilot could not see the runway, and that's why he would have carried out. But he has already taken 2 loops. How is it possible that he could not see? The pilot will carry out a missed approach in case if he's not comfortable to land on the runway. Yeah. Very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience. Very seasoned. The co-pilot was also 15,000 hours. Okay. 1,500 hours. Yeah. And the captain was very experienced, instructor examiner material. He was with Sahara, he was with Jetlight, he was with Jet Airways, and he was very experienced on this type of aeroplane also. There was absolutely no problem in the aircraft. There was no technical failure in the aircraft. I don't know. Why should I ground them? They're all fit aircraft. Why should I ground them? Okay. That's not my decision. Okay. The Learjet worldwide is a very, very dependable aircraft. So why should we ground them? My deepest condolences. So Captain Sumit Kapoor was a very good friend of mine. Very good friend of mine. He was a brother to me. Yeah. His son is also a pilot with us. Captain Shambhavi was a daughter to me. She was a child to me. And both of them were extremely good human beings, extremely good pilots. So unfortunate. They're from Delhi. They're from Delhi. It is very unfortunate this has happened. Please give us time to come out of this, irreparable shock. करीब 11 बजे मिली क्योंकि मैंने न्यूज़ वगैरह देखी नहीं थी, मुझे तो नहीं मालूम। मेरे छोटे बेटे ने ऐसे बताया कि ये हो गया है और वो इन्हीं की कंपनी का, चीनी की कंपनी का ही कोई एयरक्राफ्ट था, जरा पता करो भाई से। मेरा छोटा बेटा हैदराबाद में, तो उसने बोला। तो फिर पर तभी मुझे थोड़ा एकदम दहशत हुई, क्योंकि कल ही रात को शाम्भवी के पापा ने ऐसे, मैं पूछती रहती थी कहाँ हो तुम, कहाँ फ्लाई कर रहे हो तुम, वो कहाँ है, चीनी कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो चीनी कल मुंबई चली गई है। आपकी लास्ट मुलाकात कब हुई थी उससे? बताया ना 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर। स्वभाव से कैसी थी? कुछ बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया, मिलनसार थी। तो नहीं तो ऐसे कौन आता मिलने के लिए, 2 घंटे के लिए आ रहा है तो चलो भाई मिलने के लिए चलो। उनके पास टाइम ही कहाँ रहता था, पर वो आती थी मिलने के लिए, चलो उषा आंटी से मिलने। एक घटना की सूचना आप लोगों को अभी 11 बजे इनके छोटे बेटे का फोन आया, तो उसने बोला मम्मी ऐसी ऐसी बात है, और वही कंपनी का वो लग रहा है, मेरे समझ से चीनी इसी में। फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे को फोन किया, फिर बड़े बेटे ने, फिर उस समय तो बिजी रहा होगा पर उसने देखा होगा, फिर उसने फोन किया, फिर उसने बताया कि उसका फोन नहीं लग रहा है, बार बार फोन कर रहा हूँ, रीचेबल आ रहा है उसका फोन। This is a very sad, tragic accident. I knew the captain, who is no more, Captain Sumit Kapoor, from my Sahara days, and that's almost about 2 decades back. Very experienced pilot, and I am told by the news report itself that the aircraft made its first approach, and then it had to go around, and it was on its second approach. I do not know whether the first approach was abandoned and missed approach was carried out due to bad weather visibility alone, or was there any technical issues also with the aircraft? Did the aircraft give any call of technical malfunction? That is also not been reported, or not to my knowledge. So what is reported by the media and the DGCA is that the visibility was marginal. That means it was neither very good nor bad. If it was really bad, then the pilot wouldn't have attempted to land. So marginal means it was in the kind of go, no-go was not very clear. And under such circumstances where we have airfields like Baramati, which do not have too many electronic gadgets to support the operation, the visibility may not be exactly what was reported, and it may be lower than what was reported, because the pilot in the aircraft does not get to see the visibility how it is reported. So
It could be a combination of bad weather, technical, or bad weather and pilot judgment error. Something under investigation, and we'll come to know because DGCA would have already taken control of all the documents of the aircraft, so that they will come to know if there was any technical shortcomings in the aircraft during its release or not. Sad one, very difficult to say what happened. From the reports that we have is that the second approach was being carried out, and did the technical problem overwhelm the pilot in the cockpit? I am unable to actually comment. Well, Learjet 45 is pretty old aircraft. I think 88, 99, 90 made. So 320 plus 20, it is almost 30 years, 35 years old make of an aircraft. About 250 of them could have been flying in the air as of now. And I know that about, say, 8 to 10 of the accidents that has actually happened with Learjet. And VSR previous aircraft was also involved in a landing mishap. But in both cases, I don't see any similarity other than the fact that Learjet is involved and the same company is involved. But I don't see any technical connection to both the incident, unless there is something found. But even the last time, it wasn't something that was really pinpointed to the technical side. I am not privy to what happened this time. हमारा लड़का का पोती है, मेरा लड़का का लड़की है, मेरा पोती मिली नहीं। कब आपको खबर मिली इस दुखद घटना की? हम मंदिर पर अली और वहाँ हमके करीब करीब 9:30 बजे खबर लगी। क्या सूचना मिली आपको? यही मिली कि उनका जहाजी में जो लड़की काम करती थी, कोई हमको बताया ये खत्म हो गई। तो कैसे खत्म कह जहाज से? यहाँ से कब गई थी? यहाँ से 2 महीना पहले। आपके बेटे से बात हुई क्या अभी? आज हुई ना। हम बिटिया के यहाँ रही, बिटिया मर गई तो मोई जो लड़कन के छोट छोट दमाद मर गए, वही हम रही ना। हमको खबर मतलब हम बिटिया बच्ची से फोन लगा के कहली तो नासिक में रहना, पूना में, तो रोवत रहना हमारे पिंकी कहाँ गई। एक आगे कुछ ना बोले, पगलाए रहना। बम्बई का बहुत लोग गए, कभी पता ना चला। देखिए, हम तो बाहर थे, जब घर पे आए तो मुझे 10:30 बजे पता लगा कि ऐसा ऐसा हो गया। हमने अपने भाई को कॉल किया, लेकिन मैं जानता था कि वो इस समय डिस्टर्ब है तो अपना कॉल तो उठाएंगे नहीं। फिर उनकी मिसेज ने भी हमारा कॉल नहीं उठाया, तो हम समझ गए कि घटना ज़्यादा हो गई है, इसके लिए उन्होंने कॉल नहीं उठाया है। आउट ऑफ द होंगे, तो मुझे तो 10:30 बजे खबर लगा। फ़ोन आया था कि ऐसा ऐसे हुआ है, तो मैं फ़ोन लगाया भाभी को जो वहाँ पे रो रही थी। बस इतना ही बोली कि मेरी पिंकी खो गई। तो हम समझ गए कि फिर गए चैनल पर देखिए पिंकी बारामती मतलब गई है अजीत दादा के साथ में, और वो प्लेन जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिर हमने न्यूज़ में देखा तो वही सब दिखा रहे थे, तभी से जान रहे। हाँ, से कब बात हुई थी आपके परिवार से? 2-2.5 महीने पहले। हाँ, की प्राथमिक परीक्षा मतलब शिक्षा बॉम्बे में हुई। हाँ, आना जाना रहता? हाँ, आना जाना हमेशा 2 महीना 3 महीने में हम लोग आते जाते रहते। क्या कारोबार है उनका? वो तो नौकरी पे हैं। उनके पिताजी जो हैं कि वो टैक्सी का ये किए हैं, भाड़े पे देते हैं, चलाते हैं, और दुकान है। यही सब है कारोबार।